Hello everyone. Because of increased cost of petrol and analyzing the cost and environmental benefits of CNG over petrol, also increased availability of CNG in Bangalore, Karnataka and Pan India, finally I have decided to install CNG in my Swift model 2012. Yes, I know price of CNG is also increasing, but with the increased mileage with CNG, it's still the beneficial deal and you will recover the kit price in 12,000 km. Today I am at Universal Auto Gas, Whitfield Road, Bangalore. They have expertise with LAVATO kits. This is government approved CNG and LPG retrofitment center. In this video, we will cover CNG installation in my Swift 2012 model. We will cover unboxing of LAVATO EXR Blue Kit and Advancer, available boot space in Swift 2012 model, post installation complete details of fitment by vendor in Hindi, Advancer bypass in Hindi. We will check 10 kg CNG cylinder capacity, leakage checks, and we will end the video by the honest feedback. So, without waiting much, let's start. Welcome to my YouTube channel Fresh Techno Rahi, and I am your technical traveler. Let's start. My Swift BXI car is 10-year-old, manufactured in year 2012 and model is Type 2. In my car, we are installing LAVATO Blue EXR kit. There are other models in LAVATO, but this model suits my car best. LAVATO is a renowned Italian brand. Let's start with unboxing. Blue Yorkshire filter, filling valve, injector, liquid box, ECM harness, map sensor, reducer, switch, indication switch, pressure gauge, hardware count, temperature sensor, license plate, steel pipe blade, high pressure pipe, low pressure pipe, multinational hose, vacuum pipe, Thank you. This is my car standing in the garage and being ready to start the CNG fitment work. This is old Swift Type 2 and boot space is very less. Before we start the work, we check the boot space to find out which CNG cylinder will fit in. First they tried fitting 12 kg cylinder. There was no space for stepney spare wheel in the boat. We tried different height stands to check if wheel can be kept below cylinder, but nothing worked out well.
Finally, we decided to go with 10 kg CNG cylinder and with stepney wheel standing at the back. Also, we need to remove the plastic boot cover to make slight space for the wheel. This is how it should look post completion of the work. There is a space to keep two small duffel bags of a cylinder, and small things can be kept below and both sides of the tire. There was not enough space near petrol filling nozzle, so we decided to continue with only one gas filling nozzle under the car bonnet. This is my car engine and fittings before installation. The installation process will take around 5 to 6 hours. We will walk through with details of fitment post completion of the entire work. सर आप देखिए ये पहला आपको शुरू होता है सीएनजी का काम इधर से। ये क्या होता है, फिलिंग वाल्व होता है, देख सकते हैं। एक होता है नॉन रिटर्न वाल्व भी बोलते हैं, सिंगल लॉक बोलते हैं। एक बार अंदर जाता है ना, वापस रिटर्न नहीं आता है, लॉक हो जाता है। वो सेफ्टी के लिए ये पिन भी हम देते हैं, डस्ट ना बैठना है इसके लिए। ये ऑन एंड ऑफ होता है, सेफ्टी के लिए आप बंद भी कर सकता है, ऐसा ऑन एंड ऑफ होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इधर लाइसेंस प्लेट रहेगा, आपका गाड़ी नंबर एंड सिलेंडर नंबर एंड फिटिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट, मतलब 3 साल का एक बार आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। वो डेट सभी डिटेल्स इसमें लिखे रहेगा। उसके बाद आपको बता दें, आपको देखिए लवाटो का ब्लू एक्सर लगाया, ये गाड़ी में ब्लू एक्सर लगाया। लवाटो में क्या होता है 32 पिन 68 पिन वो सभी आता है ना, ऐसा नहीं आता है। खाली ब्लू एक्सर, ई एक्सर, OBD2 ऐसा आता है। ये सीक्वेंशियल किट है, ब्लू एक्सर सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आप देख सकते हैं इधर रेपोरेटर, इसको किट बोलते हैं। लो मतलब सिलेंडर से हाई प्रेशर गैस आता है ना, उसको लो प्रेशर करके किट को कितना चाहिए इंजेक्टर को वो इधर से सप्लाई करता है। वो बेबी फिल्टर भी डाला है, वो स्विच ऑफ रखने के लिए इंजन को डैमेज ना करे इसलिए। उसका बाद होता है मैप सेंसर, मतलब वही ECM को सिग्नल देते हैं सॉफ्टवेयर को, हम कितना स्पीड भागना है क्या करना करेंगे यही एनालाइज करते हैं। उसका बाद आप देख सकते हैं इधर इंजेक्टर बिठाया, ये फिल्टर के पीछे आप देख सकते हैं, इधर दिखा रहा है आपको, यही इंजेक्टर होता है, 4 इंजेक्टर। और इधर गैस इनबिल्ट दिया, आप देख सकते हैं मैनिफोल्ड में। अब कितना होता है उतना भी आप नजदीक में ही दे दिया हम इंजन का पास, क्यों, मतलब रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए, इसलिए हम कितना होता है उतना नजदीक ही देता है कनेक्शन, आप देख सकता है। और वायरिंग से भी आप देख सकते हैं, वो साथ सारा है। सब लोग बोलता है इसको पाइप डालना है, पैकिंग ज्यादा करना है, वायरिंग ज्यादा मारना है करके। मेरा आइडिया से क्या होता है, पूरा पैक करता है ना, हवा नहीं चलता है, वो तभी तभी गर्मी होता है ना, वायर का वायर ना मेल्ट होना है, इसलिए हम लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा से किया। और शॉर्ट सर्किट ना होना है, किट को डैमेज नहीं होना करके हम फीस भी लगाते हैं, आप भी देख सकते हैं। ये लवाटो का फीस होता है, मेन फीस। अगर कुछ शॉर्ट किट होता है ना, फीस चल जाता है। इस हमारा लवाटो किट ECM का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इतने ही सिंपल का सेटिंग होता है गाड़ी में, कुछ भी गड़बड़ करना है, ज्यादा होना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी खोलता भी नहीं और ज्यादा अल्ट्रेशन भी नहीं करता है। कभी इंजन को इंजेक्ट होता है 4 पाइप ओनली, कौन सा है इंजेक्टर का, और पूरा किधर किधर खाली जगह है उधर आराम से बिठा रहेगा। ये इंजन रूम का इतना ही फिनिश होता है। आपको हम बता देते हैं स्विच कैसा आता है, स्विच कितना स्मार्ट से है देख सकते हैं। इसमें आपको गैस में चल रहा है, पेट्रोल में चल रहा है, लाइट जलता है और उसका पास गेज भी पॉइंट दिखता है। अभी गैस फुल नहीं करवाए इसलिए वो ऑन नहीं हुए, गैस फुल होने के बाद ये दिखाता है। बीच में एक सॉफ्ट स्विच भी है, अब क्या बोलते उसको, मैनुअल पेट्रोल टू गैस, गैस टू पेट्रोल मैनुअल चेंज करना है तो दबाना है, नहीं तो वो पूरा ऑटोमेटिकली वही चेंज ओवर होता है। आपको गेज भी दिखाता है। आप देख सकते हैं ये 60 लीटर का टैंक, मतलब 10 kg का टैंक बिठाया,
साहब को लगेज प्रेफरेंस के लिए हमने मैनेज किया, इसलिए स्टेपनी बाहर लेना पड़ा, नहीं तो नीचे एडजस्टमेंट कर सकता था। इधर देखिए लगेज भी रखने के लिए जगह मिल गया, देख सकते हैं इतना जगह मिल रहा है। ये शिफ्ट टाइप 2 होता है। और देखिए इधर हम लोग ऐसा इतना बड़ा पाइप क्यों आप पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, आपको दिख रहा है ना, इधर से आ जाए सर, देखिए आप देख सकते हैं इधर ये प्रेशर वाला होता है, मतलब टैंकी से हाई प्रेशर के गैस बाहर आना था ना, अभी आता है ना, कभी आए तो गाड़ी का अंदर ना जाना, इसलिए हम लोग ऐसा सीलिंग डाल के ये वेंटिलेशन आउटसाइड कर दिया हम लोग। ये क्या होता है, साइलेंसर राइट साइड में है, वेंटिलेशन गैस सीधा बाहर चल जाता है, वो हवा में वाइब्रेट हो जाता है, आपको डेंजर का कम रहेगा। सेफ्टी का कयल इतना रहेगा। और ब्रांड न्यू टैंकी यूज किया, इधर स्टॉक में आप देख सकते हैं, खाली ब्रांड न्यू टैंकी यूज करते हैं, ओनली फॉर लवाटो ब्रांड यूज करते हैं हम लोग, ओनली फॉर लवाटो। हेड केयरफुल, डम करिए, आ जाइए। हाँ देखिए सब मैं बोल रहा था आप लोग को, गैस फ्लो ओवरफ्लो हो तो बाहर साइड आउटसाइड वेंटिलेटर में बाहर जाते करके आप देख सकते हैं, इधर नीचे उतना बड़ा पाइप भी दिख सकता है। और नीचे हाई प्रेशर पाइप गया, उसका ऊपर वो प्लास्टिक का कोटिंग भी रहेगा, रबर का कोटिंग, क्यों मतलब वो ज्यादा लाइफ आना, लेके रस्टिंग नहीं पकड़ना करके। ये क्या होता है, MS मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील होता है, ये मजबूत लाइफ भी आता है। ये ओरिजिनल लवाटो का है, मेड इन इटली से आया प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं पाइपलाइन, आपका पेट्रोल पाइप किधर गया उधर ही हम लोग देता है पाइप, क्यों मतलब नीचे नहीं टच होना है, किधर भी बम्प में और रास्ते में किधर पत्थर की तरह ना टच होना है, डैमेज नहीं होना है। इसलिए आप देख सकते हैं पूरा पेट्रोल का पाइप का साथ ही गया, सेफ्टी का सेफ्टी नंबर 1 सेफ्टी हो गया। आप देख सकते हैं इधर से जाके आपको दिखाया ना फिलिंग वाल, उधर कनेक्शन रहेगा इसको। बस सब ये एडवांसर होता है। आपका हमारा CNG किट क्या लगवाया, अगर कभी भी स्टार्ट ना होता है, कुछ भी होता है, आपको डाउट रहेगा CNG लगवाया मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है, उस टाइम में अगर हमारा भी प्रॉब्लम रहेगा भाई, तो भी आप कुछ भी नहीं करना है, इसको खाली ओपन करना है, इसको लॉक ओपन करके ये साइड पे रख देना है। इधर देख सकते हैं आप लोग, इमरजेंसी प्लग करके इसको खाली इधर लगा देना, और लगा देता है ना। हम अभी CNG का क्या क्या फिटिंग इंस्टॉल किया ना, वायरिंग ये सभी न्यूट्रल हो गया। अभी पेट्रोल का बिल्कुल कंपनी से क्या फिटिंग है ना, वो फिटिंग ही चल रहा है। अभी ये लगा दिया तो हमारा CNG का वायरिंग पूरा न्यूट्रल। CNG अब नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। CNG चलेगा नहीं, पूरा बंद है, और पूरा वायरिंग डिसमेंटल मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। कंपनी का वायरिंग क्या है वो हो जाएगा अगर ये लगा जाए, इसलिए इसको इमरजेंसी प्लग बोलता है। ये लगाने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है ना, तभी आप सोचना है CNG का प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी का रहेगा। ये लगाने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ तो वो CNG का प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी का दूसरा प्रॉब्लम रहेगा, वो सोचना पड़ता है। इसलिए इसको इमरजेंसी प्लग बोलता है। आप देख सकते हैं ऐसे निकाल लेना, ऐसा डाल लेना, और तो नहीं बस वाटर नहीं जाना करके इसको वाटर प्रूफ रबर भी दिया, ऐसा डाल देना है, उतना ही। इसको आप इधर टैग कर देता है हम लोग। The work is completed now and we are going to CNG pump to fill the gas in the cylinder first time. There was good pressure at pump. We got 8.78 kg gas in 10 kg cylinder on pressure 200 to 220. अभी देखिए ये लीकेज का चेकिंग भी होता है। हाई प्रेशर गैस है ना, किधर भी गैस ना लीक होना, क्यों मतलब लीक होता है ना, आपको माइलेज का एवरेज भी कम आता है, आपको गैस भी वेस्ट होता है, स्मेल भी आ जाएगा। इसलिए हम लोग काम करने के बाद ये सभी जगह में हम लोग ऐसा क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट का फोम लगा के देखता है। अगर लीकेज है तो आपको बबल्स आ जाएगा, आसान से दिख जाएगा, इसलिए इतना ही लीकेज का चेकिंग होता है। देखिए अभी सेटिंग का काम चल रहा है, लैपटॉप कनेक्ट कर रहा है किट के लिए। देखिए ये ACM से आता है, इसको बोलता है हम कंट्रोलर प्लग करके, इसमें हम लगा के
वो लैपटॉप देके आप केबल इधर गया, इधर से जाके इधर लैपटॉप कनेक्ट हुआ, इधर कैलिब्रेशन का काम चल रहा है। After completion of calibration on idle engine, they have done the calibration while I was driving to consider my driving style. Time for my honest feedback. First thing, I have not found much difference in pickup with petrol and CNG. Yes, I have to compromise with boot space, but I will try to manage with small duffel bags. Again, I know the price of CNG is also increasing, but still with my average running per day 50 km for 20 days in a month, I will recover the price of kit in 12,000 km. Time to end this video. I will come up with another video to show the mileage of my car on CNG. Thank you for watching my videos. Please like my videos and subscribe my channel. Thank you.